श्री प्रतिष्ठानचा अभिनव उपक्रम सैनिकांसाठी 78,000 राख्या पाठवून दिला सामाजिक संदेश। महाराष्ट्र सरकारने राबवलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा 1500 रुपयाचा पहिला हप्ता असे 2 महिन्याचे 3000 रुपये माता भगिनींच्या खात्यात जमा झाल्याने माता भगिनींमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। ऐन रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता मिळाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तसेच भारत मातेचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांसाठी प्रेम आदर व्यक्त करण्यासाठी श्री प्रतिष्ठानच्या वतीने शनिवारी शहरातील पूर्व भागात अनेक ठिकाणी अभिनव उपक्रम घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नेहमी श्री प्रतिष्ठानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह देशाचं रक्षण करणाऱ्या सैनिकांसाठी तब्बल 78,000 राख्या पाठवून दिल्या। यावेळी पूर्व भागातील माता भगिनींनी श्री प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा श्रीनिवास संगा यांना राखी बांधून आपले प्रेम व्यक्त केले। श्री प्रतिष्ठानच्या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत असून श्री प्रतिष्ठानने या उपक्रमातून महाराष्ट्राला एक प्रेमाचा संदेश दिला। या कार्यक्रमाला श्री प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीनिवास संगा, देवा विटकर, तुषार जक्का, बालाजी श्री चिप्पा, ॲडव्होकेट संदीप संगा, संतोष दांगडे, अंबादास कुडक्या, लखन दांगडे, प्रियंका संतोष दांगडे, पत्रकार अशोक सामल, वैजनाथ उगडे यांच्यासह श्री प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी सहकार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नमस्कार। आज या ठिकाणी आपण महाराष्ट्र शासनाने राबवलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत आपल्या सगळ्यांना 3,000 रुपये खात्यात जमा झालेले आहे, जेणेकरून आपल्या माता भगिनींना एक उपहार म्हणून रक्षाबंधनाच्या निमित्त महाराष्ट्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व तसेच अजितदादा पवार यांनी राबवलेल्या उपक्रमामुळे आपल्या सगळ्या माता भगिनींना आपल्या खात्यात 1,500 रुपये दर महिना येणार आहे। तसेच अजून एक उपक्रम, वर्षाला 3 गॅस आपल्याला फ्री देण्यात येणार आहे। मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वेळेस योजना राबवलेला आहे व तसंच भविष्यात आपल्या सगळ्या माता भगिनींना व समाजातील प्रत्येकांना शासनाचे योजने आज आपण लाडकी बहीण योजना प्रत्येकाला पोहोचलाय। येणाऱ्या काळात बी श्री प्रतिष्ठान शासनाला जो योजना काढेल, हॉस्पिटल असू द्या, तुमचं बिडी कारखाने असू द्या, अशा कुठल्याही योजनेसाठी आम्ही 8,000 ऑफिसर दिवसभर मी पनिచేస్తాను। మా మమ్మీ भी బిడిల్ చేస్తుంది, నేను ఎప్పటికీ బిడిల్ దాంట్లోనే పెట్టకైనా ఉన్నా। కానీ 10 वर्ष निश्चयली बनवलं असं ऍक्च्युअली मथुरीवाड गावाले याला साधा येणं नाश्त्याचे कोते बी 100 रुपये वर्ष मन आडेलो दिवसभर कस्टमायझेशन అంటే पूर्ण महिन्याला 2,500 रुपये बी राहू। ఆ 2,500 రూపాయలు ఇయ్యాల డేట్కు ఇల్లు గడిపేది చాలా అవగడ్డని। యాక్చువల్లీ ఈ ముద్ద మీద ఎవరైనా మాట్లాడాలి, కానీ మనలో కేవలం మాట్లాడే సత్య మనస్థితి లేదు। దీనికోసం మనం అందరం ఏకత్రై మనం కొట్లాడి అడిగి తీసుకుంటేనే మనకి ఇస్తారు। ఇట్లానే మన గురించి ఎవరు విచార చేసేటోళ్ళు లేదు। దాని గురించి మనం ఏకత్రై భవిష్యత్తులో మన కోసం ఎవరు పని చేస్తారు వాళ్ళ కోసం మనం నిలబడాలి। అని మీకు ఏమేం అడచలు ఉన్నాయి అది మీరు నోరుతో చెప్తే ఆవాజ్ లేపితేనే తెలుసది। మీరు ఎవరు అడగకుంటే ఏం చెప్పకుంటే ఎవరికి ఏం తెలియదు।